Debate! Stand at ease. Attention. Flag hosting. National anthem. Now I would like to request our Honorable Chief Guest to occupy the seat, and within a certain that we are going to start our program. So in connection with welcome to our Chief Guest and our other dignitaries from Kendriya Vidyalaya #1 Bhubaneswar, first shift and second shift, heartily welcome our Honorable Chief Guest and other dignitaries. My dear children, my colleagues,
parents and Mitali Sahu, ex-student of this Vidyalaya. She is the special invitee of this auspicious occasion that she is living in Canada, but to celebrate Indian independence that she has come to Odisha, to touch the soil of Odisha, to give respect, to pay homage to Odisha, because we feel proud for Mitali Sahu and her family, because that she is living in abroad, Canada, but her mind, her heart, her spirit, her dedication, that brought her to this Vidyalaya. In 2000, she was the ex-student of this school. And now, my happiest welcome to all the dignitaries, chief guests, and also special welcome to Mitali Sahu and her family. I won't take much more time, so I want to invite a student at Tiny Church from primary section, Miss Aradhya Mahapatra from 5th D, to give the speech on this auspicious occasion. Aradhya Mahapatra from 5th D. नमस्कार। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण, सभी अभिभावक और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आज हम यहाँ पर अपने देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। हम इस खुले आसमान के नीचे निडर और बेफिक्र होकर सांस ले पा रहे हैं, केवल हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से। उन महान विभूतियों के लिए दो पंक्ति। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आजाद कराया। 15 अगस्त 1947 को भारत के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इसी दिन भारत के आजाद होने पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। तब से प्रतिवर्ष देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और सभी शहीद जवानों को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस बार देश हर घर तिरंगा का पर्व मना रहा है। क्या आप जानते हो कि हमारे तिरंगे को पिंगाली वेंकैया जी ने बनाया था? इन तीनों रंगों के अपने विशेष महत्व और मतलब है। केसरिया साहस और बलिदान का प्रतीक कहा जाता है, सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक कहा जाता है, जबकि हरा रंग संपन्नता का प्रतीक कहा जाता है। तब से अब तक भारत बहुत आगे बढ़ चुका है हर क्षेत्र में। अतः मेरे प्यारे मित्रों, चलो आज ये प्रण लें कि इस देश को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम विद्यार्थी इस देश के भविष्य हैं। जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान। इस दिन ले लिए जो हंसकर कुर्बान, आजादी की खुशियां मनाकर लो शपथ ये की, बनाएंगे देश भारत को और भी महान। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद। Thank you, Aradhya. No doubt you are inspiring speech that the wording challenge or inspiring speech that appeals to each and everyone. So, before I start the next program, that I would like to tell you freedom. Freedom is not the gift. Freedom is not the gift, but the responsibility to accept and maintain it to and hand over to others, because it is not gift. The challenges, the responsibility that we have to take it, and we have to hand over, and we have to remember the sacrifice of the martyrs who have dedicated their lives for sake of motherland, who have dedicated their lives for sake of own family also, the family completely. They have sacrificed everything. They never think of their family, only they think of the mother. Anyhow, now
that we have to switch over the next item, patriotic song, that we have to enthusiastically that we are waiting to listen the patriotic song. I would like to request Mr. P. Shidas, music teacher of our Vidyalaya, to sing the patriotic song, that is the group song of our Vidyalaya, our children girls.
you children for this melodious patriotic song. It was really wonderful and heart-touching, and you are the really warriors of this country to remind us regarding or about the martyrs of this nation. Now, a speech by Ms. Soumya Srimay Panda of the secondary section. Soumya Srimay Panda, please. A very cheerful and happy morning to one and all present over here, esteemed guests, honorable principal sir, respected teachers and staff, and my dear brothers and sisters. This is Soumya Srimay from class 12D, standing before you to say a few words on the occasion of Independence Day. It is an auspicious occasion for us because we have assembled here to celebrate our 76th Independence Day. It is also well acknowledged that Azadi Ka Amrit Mahotsav has been celebrating throughout the country to make the 76th Independence Day a commemorative event. Now, going back to the history, the foundation of India's struggle for independence was laid in 1857 with the Great Revolution, hailed as the first struggle for India's independence. Now, during this eventful of 90 journey, our country went through many ups and downs. And finally, the culmination of India's struggle for independence was marked on 15th of August 1947. Now, during this journey, so many people fired with unquenchable thirst for freedom along with indomitable spirits have either laid down their lives or were destined to languish behind a bar. Why? Just to free our mother nation from the shackles of colonialism. Now, those mighty Britishers who often trumpeted that the sun never sets on the horizon of British Empire. Yes, those mighty Britishers who often said that the sun never sets on the horizon of British Empire were compelled to leave our country bag and baggage. Now, their departure from our nation also proves the prophetic observation of none other than the father of our nation, Mahatma Gandhi. So what is granted under fear? What is granted under fear can be retained so long as the fear lasts. Now, with independence, our country inherited burdens of economy, illiteracy, poverty, communalism, casteism, and so on. But needless to say that the successive elected governments have enthusiastically tried and endeavored to get rid of all the socio-economic problems and have proved successful in this regard. Now, the Planning Commission, along with its new incarnation, that is the Niti Aayog, have been able to prove successful to give a new orientation to the development process of India. It is important here to note that along with other nations of the world, India as well faced an unprecedented and unusual situation of COVID-19, which was totally previously unheard of. Now, India has been able to overcome this pathetic situation with the wholehearted support of its countrymen. Hence, learning a lesson from tackling the COVID situation. On this auspicious occasion of 76th Independence Day, let's make a solemn promise under this tricolor of ours that we will make the 21st century as a century of India. Jai Hind! Thank you, Soumya. So, no doubt that you have recollected our past in connection of the present, and we have to peg towards future. Because that you know, our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, that is giving emphasis that we have to be self-dependent. Anyhow, the boarding citizen of this country, they have to take the many challenges that which is lying ahead with us, and they have to face with boldness, with confidence, with happy spirit. Now, the time to listen a beautiful Odia song. That you know, that is a very patriotic song, and Mr. Pishidas of our music teacher, that she will sing, and really must touching and the fervor of patriotism.
गोटिए कंठे गोटिए मंत्र मातृभूमिर जय भारत मारा संतान में हे हम परिचय। एक उड़िया गाना और मेरा बहुत फेवरेट गाना है, मैं इसलिए आपके सामने पसंद कर लो। छोटा था गाना गाया था इंडिपेंडेंस डे में, तो आज मेरा छोटा का दिन बचपन का दिन याद आ रहा है। कोटिए कंठे कोटिए मंत्र मातृभूमिर जय कोटिए कंठे कोटिए मंत्र मातृभूमिर जय भारत मारा संतान में हम परिचय। भारतीय हमें भारतीय हमें भारतीय हमें भारतीय। कोटिए कंठे कोटिए मंत्र कोटिए कंठे कोटिए मंत्र मातृभूमिर जय भारत मारा संतान परिचय। भारतीय हमें भारतीय हमें भारतीय हमें भारतीय। सारा दुनिया रे शांतिर वार्ता आमे तो सुनाई देबू नुआ करी आमे गढ़ीबू ए धरा सबुठी आगुआ हेबू। सारा दुनिया रे शांतिर वार्ता आमे तो सुनाई देबू नुआ करी आमे गढ़ीबू ए धरा सबुठी आगुआ हेबू। हे माटी मार वंदना कर जय भारतर जय भारत मार संतान में हे हम परिचय। में भारतीय हमें भारतीय हमें भारतीय हमें भारतीय। गीता बाइबल कुरान आमर जीवन होइछि साह सबु धर्म को सम्मान देइछि माटी अम्मा। गीता बाइबल कुरान आमर जीवन होइछि साह सबु धर्म को सम्मान देइछि माटी अम्मा। माँ लगी जब जीवन देवकु तिले हेले नहीं भय माँ लगी जब जीवन देवकु तिले हेले नहीं भय। भारत मारा संतान हे हम परिचय। भारतीय हमें भारतीय हमें भारतीय हमें भारतीय। गोटिए कंठे गोटिए मंत्र गोटिए कंठे गोटिए मंत्र मातृभूमिर जय भारत मारा संतान में हे हम परिचय। भारतीय हमें भारतीय हमें भारतीय हमें भारतीय। धन्यवाद। To children given began process, so the beautiful patriotic song, Swarat song, give a big hand clap. एकदम आवाज नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? जोर से, with full input, but you have to give your clap. So, that I told you previously, that our ex-student for whom that I feel pride and pleasure, that Mitali Sahu, that I think she was the best of 2000. Okay. And she has
come to celebrate 76th Independence Day with us. Already I have given that how she was very eagerly that she has come to celebrate this Independence Day, and no doubt her patriotic feelings that definitely that will inspire us. In this connection, I would like to invite Mitali Ma'am, that because she has come with her family, Mitali Ma'am, to at least to say something, to spread her impression to our children and the August gathering. Thank you, ma'am. Good morning, everybody. Happy Independence Day to all of you. This is Itali Sahu, class 3A, roll number 12. That's how I used to introduce myself. I'm visiting the school after 22 years, and you kids have been an amazing kid. I've been watching you guys from the time I entered the school premises. When ma'am used to say, "Taliyan sunai nahi de rahi hai," we used to shout from there, "Laddu mile nahi hai," but you guys are so quiet. I want you guys to feel proud that you are part of an amazing school. This school has given amazing students, and I'm one of them. Everywhere I travel, I have traveled 29 countries so far. You will find a KVN there. And feel proud for where we are today, because this school has amazing teachers as well. I am in contact with many teachers. You won't realize how these teachers change your life forever, for good. There are a few things I wanted to say. Actually, there is a lot of things I want to say. I want someone to do a time check so I don't keep talking. Couple things. I'm going to switch to Hindi now. ये जो प्लेग्राउंड है, यहाँ पे हम लोगों की बहुत सारी यादें हैं. ये कॉरिडोर में हम लोगों का क्लास था, and we used to, I think every corner of the school we have spent time. I was a student here from grade 3 to grade 12, and I passed out grade 12 in 2000. That was the last time I visited. Since then, there are a lot of changes in the school. I feel really proud walking in here. I got to sit in principal's cabin for 2 minutes. I tell you what, I got goosebumps. The last time I remember I was in the principal room was to attend a complaint. This time it was for a different reason, and I was walking with the principal right behind him. I was one of the girl who was standing with the flag, receiving the guests, and I probably was of Aradhya's age when I was standing here and giving a speech about Jhansi Ki Rani. Fortunately, I won a certificate that time. But I tell you what, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, and it is doing it. Feel proud for yourself. Don't run behind numbers. Run behind what you want to do in life. Make good friends. That's what I would suggest. A friend that you could talk to when you are in trouble. These friends are friends for lifetime. And have fun. This is the age where you will not get what you are getting now later in the life, and you will repent if you don't enjoy it. मस्ती करें, थोड़ी सी पढ़ाई भी करें, अपने ड्रीम्स को अचीव करें. सबसे बड़ी चीज़ ट्राई करते रहिए. There is always a second chance in life, और कभी हार नहीं मानेगा. I was not a topper, but I did well in life. In the sense, I'm happy with my life. I made my parents proud. I made, hopefully, my teachers proud as well. खुश रहिए. जो आपको अच्छे लगे वही कीजिए. आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, पढ़ाई कीजिए, उसके साथ मस्ती करना मत भूलिए.
Thank you all. It's a privilege to be part of this occasion today. I feel really proud. I'm getting goosebumps still. I won't hold you guys up longer. Thank you, Ms. Principal, for giving me this opportunity. Have a good day, everybody. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. At least you have touched the every nook and corner of this Vidyalaya, sharing your experience in your childhood age, in your school days, which is gone no doubt. That is past, but the experience which you have shared really memorable. So, men may come and men may go, but I go on forever. Men may come and men may go, but I go on forever. So many people will come, so many people will go, but this will stay forever and ever. So anyhow, that because in this auspicious day, I would like to suggest my children, at least whatever it may be, you become a doctor, an engineer, or lawyer, whatever it may be, but at least you try your best to become a good citizen. That is most important thing. Try to be a good citizen, because becoming a doctor, becoming an engineer, that is not important. That you try your best to be a good citizen. So now I would like to invite another girl from primary section, Shanbhi Rath, that she will give the speech. Shanbhi Rath from primary section. Shanbhi Rath. इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, आज स्वतंत्रता दिवस आया है। आज स्वतंत्रता दिवस आया है। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं सानवी रथ कक्षा 5 की छात्री आज स्वतंत्रता दिवस पर कुछ शब्द बोलूंगी। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जैसे कि हम जानते हैं कि हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। आजादी के पीछे कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे जैसे कई वीरों ने अपने प्राणों के बलिदान दे दिए। आजादी के बाद हमारा भारत बहुत तरक्की कर चुका है, विज्ञान में, शिक्षा में, टेक्नोलॉजी में, लेकिन अभी भी हमारे भारत में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि अब तक नहीं मिटी। गरीबी, बेरोजगारी, असमानता। इसलिए इस गौरवशाली दिन में आइए और हम हमारे भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प लें। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। सलाम करो उन वीरों की जिनसे हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। जय हिंद। Sandeep, thank you. At least your good speech and inspiring speech. Definitely, that gives the way the wording challenge they accepted. And now the time that I would like to invite Mr. Sachindaram S, PGT English of this Vidyalaya, to state his impression on this auspicious day. Sachindaram sir, please. Good morning. Good morning to one and all. That's wonderful to hear you all energetic because you have been standing for such a long time. But then you are special platoon. You have the energy to last the whole day. You are symbolic of the army of India. Respected Principal Sir, the Chief Guest for the day,
Shri Bhupinder Singh sir, dignitaries on the dais, special invitee Miss Mitali Sahu and her family, teachers and staff of KV.NO.1 Bhubaneswar, all the parents who have come here, and dear children who are here and also who are watching this program online at home. 75 years ago, at midnight, India made a tryst with destiny, and independent India was born. It was drained, it was divided, it was drained of all its wealth, it was divided until it bled, yet desperate to make it on its own. We wanted to stand on our own feet. 75 long years have passed. It has been a long journey indeed for India. And now when we look back upon the road that we have been traveling and we have traveled, there are clear-cut and vivid reasons for us to be proud. We can say that we have made it. We have independent initiatives like Make in India, Mangalyaan, the Moon Mission, the vaccination of COVID-19, and hundreds of such initiatives by various prime ministers and the presidents who have throughout been light to us. You know, the world looks on India with bated breath, especially during the general elections. Do you know the reason for that? Who can tell? Who can tell the reason? During the general election, the whole world, the press of the whole world, the BBC, the Reuters, and all the people of the world look at India with wonder. This is because India is the largest democracy, along with being an intricate demography. People wonder how we are able to pull it off in the manner we are doing it. So Winston Churchill, when he talked of India, he did so with contempt, calling it no more than the equator. Why did he bring this metaphor of the equator? Just an imaginary line, that is what an equator is. And he believed that India actually did not and cannot exist as a single country. But we have proved to the whole world that all such negative criticism is wrong, and we are moving forward, marching forward. The Azadi Ka Amrit Mahotsav, which is being celebrated in happiness, in pride of this fact. And our ambition is towards 2047. 25 years more. At that time we will be celebrating 100 years of independence, and today is that day. Today is that day when we hand over the bright torch to the youngsters standing in front of us. And the youngsters who all the teachers here are teaching when we enter the classrooms. We hand over this bright torch to the youngsters who are growing up and will be running the country in various positions, in various capacities. जो मेरे सामने खड़े हैं और जो घर में हैं, घर में बैठ के वॉच कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स, वो we are handing over the torch that is burning bright. The best example is sitting here. Miss Mitali Sahu, who set an example by coming. I think she is a via media between the teachers and the students, because she has set an example for all of us, that how she has a sense of pride. That is what has brought her here. Do we have that sense of pride for our platoon
Do we have that for our classes? Do we have that for our school? If we have, I am sure you too will be setting an example 25 years hence when 100 years are over and we are celebrating, and you will be here, you will be all around, and you will be ruling India. But the question in your mind will be how to do that. It is quite simple. Let me end my speech by giving that simple example. What can we do? We can do our little everyday duties. You know, even to get a 75% marks in CBSE exam, you need to do systematic work. I bring in academics not because that is all important. All important is, as just now ma'am said, you have to be interested in all round activities. That is what is making these children stand in front of us. If you go by a beautiful saying, little drops of water, yes, I think that child is completing it. What is that? Little drops of water, little grains of sand make the mighty ocean and the pleasant land. What does it mean? It means that little efforts from all of us every day, each day, that counts. Each day counts. It may be a very small duty, it may be a very small work. Even maybe you are at home, it's a very small work. So, wishing you all that you might have got the message that we have to keep the torch burning bright. Let me end my speech by wishing you all the best. Jai Hind. Thank you, sir. The very thing that you have told, that little drops of water that makes the mighty ocean. Really, little efforts that will definitely, that will lead our country, lead our nation, no doubt, brightful country and bright nation. So now that I told you regarding the school has already reached its zenith in different activities. That you know, scout and guide, corps, bulbul, everything. With the motto, service to mankind is service to God. With this motto, the scout guide branch, corps, bulbul branch, that is established in our Vidyalaya. So 5 certificates that has received, very prestigious certificates, that has to be distributed by our tiny cups and bulbuls. So in this regard, I would like to request our S.K. Parida sir to come over here and to announce the name, and also along with I would like to request our Honorable Principal sir to give her the certificate. Sir, please. Thank you, madam. Good morning and happy independence to all of you. I am happy to announce that 10 children, 5 from first shift, 5 from second shift, got the highest Golden Arrow Press Award, which was received from our headquarters, Delhi, for the session 2021 and 22. Under the able guidance of Mr. M.K. Panda, L.N. Manasa, Mr. A.K. Samal, Mr. Jaimin Saul, Mrs. Josnarani Biswai, and Mr. L.N. Mana, we got all these awards. They got Golden Best Hero and certificate and case award of 1,000 each. So I call upon the children to the stage to receive the award from our principal sir and also M.K. Panda sir and L.N. Mana sir. Please, Asit, Swansiti Muduli, Ansika Das, Akansha Karunamoy, Saidas Rai Samat Singha, M. Tatparya from the first shift. And from the second shift, first, Swansiti Muduli.
come forward and receive the highest prestigious Golden Award from Conformable section. Ansika Das. Next, Ansika Das. Ansika. Third one, Akansha Karunamal. Next, Saira Rai Sound Singer. They got certificate and 1000 Guest Award. M. Tatparya got certificate, badge and 1000 Guest Award. From the second shift, Parul Swine सारे बच्चों लाइन अप कर दीजिए एक साथ next, Chitranjali Priyadashini. They got Golden Base certificate and 1000 Cash Award. Chitranjali. Next, Amrita Vishwal. Nishita Panda. Next, Sanidhi Sudipta. All the 10 children brought knowledge to our Vidyalaya. They got the highest award in Conformable section. Thanks to, okay, I would like to invite M.K. Panda sir to bless the children. Thank you, sir. Actually, just I am going to tell about this award. This is the highest award in the primary section. All the corps bulbuls. Actually, it is the highest award. This certificate is issued by Bharat Scouts and Guides, New Delhi, under the Ministry of Ministry of Youth Affairs. So that department is issued this certificate. This certificate is not here or not KV State. From Bharat Scouts and Guides, New Delhi, this certificate is issued 1000 cash incentive issued by our KVS headquarters. So on this occasion, I would like to invite, or I would like to encourage, that is tell to our club masters, club leaders, that to encourage the clubs and bulbuls that they have to register themselves in the Golden Arrow Base application. Recently we have completed Chatur Charan. Just yesterday we have completed Chatur Charan and Hirak testing camp. So I would like to tell to all the teachers, that means the club masters and club leaders, to register and the application form, Golden Arrow application form, so that in this year also we have to brought laurel. We have to bring the laurels to our Vidyalaya. Thank you.
announcement of speech only. Now the children of our Vidyalaya, they have prepared a group dance. The patriotic group dance, and now the children they will stage, and we have to see that beautiful dance that is staged by our children, group dance. मेरा नाम ओ देश में
After this mesmerizing dance, so who has contributed a lot to stage this program, that I would like to invite Dipsi Patnaik, the dance coach of this Vidyalaya, to come over the dais along with Mr. Pishidas Arnejiti. Madam, Dipsa madam, please come over the dais, because your effort that has given the color, your effort that has given the color of this program. Ratna ma'am, where you are, please come over the dais. Ratna ma'am. Anyhow, Sir Pishidas sir and Madam Patnaik, both are having the lots of efforts to this program a grand success, no doubt. Because within the very short time that we have prepared it, anyhow, that's reached the journey that I expect, I hope. Okay, thank you madam, thank you sir. And now we are at the fag end of the program, but you know, all the program is successful when the blessing comes from our superiors. So in this juncture, I would like to invite our honorable principal sir to bless the august gathering. Sir, please. शुभ प्रभात। आज की ये मंगल बेला, हेलो, हेलो, आज की ये मंगल बेला आजादी का 75वां वर्ष, जिसकी वर्षगांठ हम मना रहे हैं, और 76वें नंबर की आजादी। दिस इज द 76th इंडिपेंडेंस डे एंड 75th एनिवर्सरी ऑफ दिस विच इज कॉल्ड आजादी का अमृत महोत्सव। अपनी बात शुरू करने से पहले आई अपोलोजाइज टू ऑल माई स्टूडेंट्स हु कुडंट कम हियर
because of some corona pandemic situations and the different guidelines of the government of India and government of Odisha. वो बच्चे जो यहाँ पर नहीं आ पाए, हमें बहुत खेद है। हमारे टीचर भी कह रहे थे कि इतने सारे बच्चे में बुलाने चाहिए थे, फर्स्ट टाइम ओकेजन था, लेकिन किन्हीं कारणों से और कुछ प्रशासनिक परेशानियों के चलते हमारे सिर्फ वही बच्चे आ पाए जो अलग अलग वर्ग में है, जिसमें एनसीसी और स्काउट गाइड के बच्चे हैं। YouTube लाइव का ये प्रोग्राम अंतिम प्रोग्राम होगा, ऐसी मेरी ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से विनती है, और 26 जनवरी ग्रैंड ओकेशन होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आज का दिन और ये पूरा साल 75वां जन्म दिवस हमारे देश की आजादी का, जिसको एक नाम दिया गया AKAM, अकाम, आजादी का अमृत महोत्सव। न केवल केंद्रीय विद्यालय में बल्कि भारत के हर विभाग में, चाहे वो राज्य सरकार का हो चाहे वो केंद्र सरकार का हो, आइदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एवरीवेयर एक धूम है अमृत महोत्सव को मनाने की। सन 2022 15 अगस्त और 1947 15 अगस्त, यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक इतिहास है जिसकी परिकल्पना, जिसके लिए बहुत सारे ताने बाने आजादी के परवानों ने गढ़े, और यह आजादी कुछ खास लोगों की वजह से नहीं मिली। स्टेप बाय स्टेप हर किसी ने गिलहरी प्रयास किया। गिलहरी प्रयास एक मुहावरा है और उसका यह मतलब है कि अपनी तरफ से जितना हो सके किया। अगर हमने रास्ते चलते कूड़ा नहीं फेंका तो यह भी एक गिलहरी प्रयास है इस देश को साफ करने के लिए। इसी तरीके से इस वर्ष को मनाने का उद्देश्य सन 2047 तक इस देश को एक विकसित देश के रूप में डेवलप करना है। आवर नेशन विल बी द डेवलप्ड कंट्री टिल 2047 इन ऑल द एरियाज, सोशल एरियाज, इकोनॉमिक एरियाज, कल्चरल एरियाज, टेक्नोलॉजिकल एरियाज, जितने भी एस्पेक्ट हैं। और इसके लिए प्रयास कौन करेगा? हम और आप। उस देश का भविष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता जिस देश का इतिहास लोग नहीं जानते। उस देश के लोग जहां की 80% आबादी को यह समझाना पड़े कि आपको क्या करना है, उस देश के विकसित होने में समय लगेगा। इस तरह के प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए है कि हम ये जान सके कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। व्हाट आर डूज फॉर अस, व्हाट आर डोंट्स फॉर अस, ये हमें जानना है। एक छात्र के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में हमारी भूमिका क्या है? एक विद्यार्थी के रूप में हमारी भूमिका सिर्फ इतनी है कि पढ़ो, खाओ और खेलो। अनवांटेड पॉलिटिक्स में पढ़ने की हमारी भूमिका नहीं है। ओनली टू स्टडी, गेट हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड गो ऑन फॉर योर फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में NEP 2020 नई शिक्षा नीति 2020 ये बताती है कि हम रोट लर्निंग को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। रोट लर्निंग मतलब रट के याद कर लेना, कि चलो किसी तरह से रट के 10th कर लें, दूसरी बार रटना शुरू करेंगे तो 12th कर लेंगे, तीसरी बार रटना शुरू करेंगे तो BTech, MBBS, BBA, MBA कर लेंगे, और चौथी बार इस रटंत विद्या का प्रयोग करते हुए नौकरी में आ जाएंगे और फिर आजीवन दूसरों की गुलामी करेंगे। पढ़ने में अच्छे होंगे, देश छोड़ के चले जाएंगे, वहां जाकर के अपने देश को कोसेंगे। मेरे देश में रोड सही नहीं, मेरे देश में ये सही नहीं, मेरे देश में वो सही नहीं। दिस इज नॉट लाइक दैट। आपको कोई अधिकार नहीं इस देश को उल्टा सीधा बोलने का अगर आपका कोई योगदान नहीं। आप योगदान करिए, उसके बाद दो बातें कह सकते हो कि ये गलत हो रहा है और हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। नेवर थिंक व्हाट कंट्री डज फॉर यू, ऑलवेज थिंक व्हाट यू कैन डू फॉर द नेशन। देश ने आपके साथ बहुत बुरा किया, सब कुछ किया, लेकिन ये मिट्टी आपको आवाहित करती है, आपका आवाहन करती है कि आप इसके लिए क्या क्या करेंगे, आप इसके लिए क्या करेंगे। ये आपसे मिट्टी सवाल पूछती है। उसी का ये त्योहार है आजादी का अमृत महोत्सव। हमारे सभी बच्चों को पता होगा, बहुत सारे पेरेंट्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हैं उनको भी पता होगा, ये महोत्सव ने पूरे साल मनाया है। पूरे साल 2022 इससे छाया रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव, इस बात को महसूस करने की जरूरत है। अभी एक दिन दो दिन पहले हमने एक एग्जीबिशन भी लगाई है मेडिकल यूनिट में,
और मेरी रिक्वेस्ट है, जो पेरेंट्स यहां पर हैं, हमारे टीचर्स हैं और हमारे बच्चे हैं, उस एग्जीबिशन को देख करके जाएं। सिर्फ जब देश आजाद हुआ तो 20 लाख से ऊपर लोग मर गए अलग अलग दंगों में। कुछ भूख से मर गए, कुछ प्यास से मर गए, कुछ लोगों को अपनी जमीन, अपनी जड़ छोड़ के भागना पड़ा। आप बहुत भाग्यशाली हैं, यू आर वेरी लकी, यू आर इन उड़ीसा। इस उत्कल जननी में आपने जन्म लिया है। विभाजन जिन क्षेत्रों में हुआ, वहां के लोगों में अगर कुछ पुराने लोग जिंदा हैं तो आपको बता पाएंगे कि क्या स्थितियां और परिस्थितियां थीं। यहां पर बैठ करके, पेपर पढ़ करके, एसी रूम में रह करके कह देना अरे ये तो ऐसे होता है, ऐसा नहीं है। उन विषम परिस्थितियों में जाकर के देखिए। इसलिए जो लोग पूरे भारतवर्ष में विभिन्न व्यवसायों के लिए जाते हैं, इंडियन आर्मी के लोग, नेवी के लोग, एयरफोर्स के लोग, वो भारत के हर क्षेत्र में नौकरी करते हैं। वो जान पाते हैं कि क्या परिस्थितियां, किस तरह की परिस्थितियां आती हैं। केंद्रीय विद्यालय एक छोटा सा भारत है। आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाके अपने बच्चे को पढ़ाइए, वो मॉरल वैल्यू डेवलप नहीं कर सकता जो केंद्रीय विद्यालय करता है। वहां पे अगर एक पिकनिक भी ले जाना होगा तो आपसे 10,000 रुपए जमा करा लेंगे पेरेंट्स से, उसके बाद ही अरेंजमेंट होगा। आपके यहां ऐसा नहीं है। पूरे भारत में हर जगह से बच्चे आकर के यहां पर पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षा हासिल करते हैं, और केंद्रीय विद्यालय ट्रेनिंग के मामले में भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। आपको जानना चाहिए, टीचर्स ट्रेनिंग कंटिन्यूएशन में चलती रहती है। उनको लगता है कि अगर कुछ परिवर्तन हो रहे हैं तो हमारे टीचर को पता हो, और जब टीचर को पता होंगे तो आपको पता होंगे। आपको पता होगा तो भाग्य बदलेगा। न केवल आपका भाग्य बदलेगा, आपके देश का भाग्य बदलेगा। जब आप उड़ीसा से निकल करके भारत के किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो लोग बोलते हैं उड़ीसा से कोई आया है। कोई ये नहीं बोलता कि साहू जी आए हैं, कि पटनायक जी आए हैं, कि मोहंती जी आए हैं। ही इज फ्रॉम उड़ीसा। जब आप राज्य से निकल करके देश के बाहर जाते हैं तो कोई ये नहीं कहता आप उड़ीसा से आए हैं, आप भारत से आए हैं। आप अपनी पहचान को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसीलिए हमारी कोई भी हरकत हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण ना बने, इसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। हम केवल हम नहीं होते। आपके बगल में जो ये पेड़ दिख रहे हैं बड़े बड़े, अगर इनकी ऊंचाई 50-100 फुट है तो ये 200 फुट जमीन के अंदर है, इसलिए इतनी मजबूती से खड़ा है। कभी ये छोटा सा बीज रहा होगा, जिस सैपलिंग निकला होगा, छोटा सा पौधा आया होगा, तब जाके आज ये विराट वृक्ष बना है। तो हमको वो विराट वृक्ष बनना है जिसकी एक एक टहनी पर सिर्फ हिंदुस्तान होगा, और जिसके लिए हमें काम करना है। हम देश के अंदर रहें, विदेश में रहें, जहां भी रहे, हमारा दिल सिर्फ अपने देश के लिए धड़कना चाहिए। वो इंग्लैंड जिसने भारत पर 190 साल शासन किया, ये गर्व की बात है कि वहां का होने वाला प्राइम मिनिस्टर शायद एक हिंदुस्तानी बनेगा। और कुछ देश ऐसे हैं जहां पर हमारे ही देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। फिजी, गुयाना, मालदीव्स, जरा इनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को देखिए, इनकी ओरिजिन कहां है। भारतवंशी पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ रहे हैं। अब आपका नंबर है। 2047 तक भारत को पावरफुल बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि ब्रेन ड्रेन ना हो। पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है, और आप लोगों से भी, इतना तेज दिमाग लेकर के दूसरों की गुलामी मत करिए। इतना तेज दिमाग लेकर के अपने देश के लिए काम करिए। और जिस देश का टीचर नंबर 1 है, वो देश नंबर 1 हो ही जाता है। टीचर्स आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचते। परिस्थितियां समकालीन हो सकती है किन्हीं कारणों से, घर में मम्मी पापा को भी गुस्सा आ जाता है, उसी तरह टीचर को भी आ जाता है, लेकिन उस गुस्से में भी वही प्यार है जो आपको बुलंदियों तक ले जाएगा। और जब ऐसी परिस्थितियां बनेंगी और आप देश के एक पर्टिकुलर प्रोडक्टिव प्रोडक्ट बनेंगे। लोग कहते हैं आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। आजादी के समय 33 करोड़ से अभी हम 132 करोड़ हैं। हमने इतना डेवलपमेंट किया है। यह हमें देखना है कि भारत की जो क्षेत्रफल भारत का है वो 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर है। क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं सकता। चाइना में घर बना नहीं सकते, पाकिस्तान जा नहीं सकते, बांग्लादेश जा नहीं सकते। तो अगर खुद नहीं समझेंगे तो एक दिन इसके लिए भी वॉर होगा कि पड़ोसी आके घर पे कब्जा कर लेंगे और घर के सभी लोगों को मार डालेंगे। ऐसा होगा। युद्ध हमेशा जमीन और जड़ के लिए ही हुए हैं। पाकिस्तान का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान लिखते हैं वो। बांग्लादेश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ। उन देशों में क्या स्थितियां हैं बताने की जरूरत नहीं है, भीख मांग रहे हैं।
वी आर द बेस्ट एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के हर तरह के लोग भारत आके रहते हैं. पर्शियन भी है यहां पर, मुस्लिम भी है यहां पर, ज्यूज भी है यहां पर, क्रिश्चियन भी है यहां पर. दे आर द different religion from different country came here and settled. They are living in a wonderful way. यहां के लोग जितना आजादी को एंजॉय करते हैं दुनिया का कोई देश नहीं करता. सीरिया जाकर के देखिए, पता नहीं चलेगा कब पीछे से राइफल की गोली पेट में घुस जाएगी, पीठ में. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर कब ऊपर से जहाज से बॉम्बार्डिंग होगी और पूरा का पूरा स्कूल उड़ जाएगा. आपको इस बात का तो डर नहीं है ना कि पीछे बैठने वाला भी चाकू मार देगा. यू आर एंजॉयिंग द फ्रीडम इन ए हाई पिच. इस आजादी की वैल्यू को समझिए और आजादी के अमृत महोत्सव में योगदान दीजिए. बहुत सारी बातें इतिहास में भी हमें, जब देश हमारा आजाद हुआ और कुछ खास प्रकार के लोगों के कंट्रोल में हमारा इतिहास रहा, वो गलत पढ़ाया गया. इस देश का पहला प्रधानमंत्री हर किसी को पढ़ाया जाता है पंडित नेहरू थे, किताबों में पढ़ाया गया, हमने भी पढ़ा, हमारे पापा ने भी पढ़ा, आपके पापा ने भी पढ़ा होगा. लेकिन अभी रिसेंटली जो डेटा आया, इस देश का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे. 1943 he made the first independent government of India and he remained the first prime minister of India. और उस समय के अलग अलग देशों ने जो धुरी राष्ट्र थे, एक्सेस पावर, जापान, जर्मनी, इटली, इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया गया एज ए इंडियन प्राइम मिनिस्टर. इट वॉज द हिस्ट्री, दैट वॉज द मेजर इंसिडेंट that we get independence on 15th of August 1947. आजाद और भगत सिंह, इन सब का योगदान भी हम भूल नहीं सकते. देश की आजादी के बाद जो किताबें लिखी गई, उन्होंने अलग अलग तरीके से हमें तोड़ने का प्रयास किया. बहुत सी किताबों को बैन कर दिया गया, जो किताबें इंडियन मार्केट में आ नहीं पाई. आपको उन सभी किताबों को पढ़ने की जरूरत है. आप फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, लेकिन इतिहास का वो हिस्सा भी जानिए जो गौरवशाली था. और मैं चैलेंज करता हूं, भारत का कोई भी कालखंड कभी अपमानित नहीं रहा जिसमें किसी भी व्यक्ति को इस बात का अफसोस हो कि इस कालखंड में गलत हुआ. यदि किसी के पास फैक्ट है, वो मुझसे आके डायरेक्ट डिबेट कर सकता है, लेकिन बात हवा में ना हो, बात विद बुक हो, विद रेफरेंस हो. मैंने कह दिया कि गलत हुआ तो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. इफ यू आर कमिंग फॉर द डिबेट, यू मस्ट हैव अ प्रूफ इन रिटन ऑर्डर, देन यू विल टॉक टू मी. आई विल टेल यू, right from the Vedic age and Neolithic and Paleolithic age till now, भारत ने सिर्फ दूसरों को दिया है, लिया कभी कुछ नहीं. अरे हम जीरो नहीं देते तो वो नंबर नहीं बना पाते, वो नंबर नहीं जान पाते. हम अगर उनको डिफरेंट काइंड ऑफ डायमेंशंस, जो बड़े बड़े आविष्कार पूरी दुनिया में हुए, न्यूटन से जाके पूछिए और कुछ जर्मन साइंटिस्ट से जाके पूछिए कि जो ये आपने इन्वेंशन किया, इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली, वो बताएंगे ये प्रेरणा हमने वेदों और उनसे संबंधित ग्रंथों से ली. You will find the destination. जर्मनी, आपने सर्न यूनिवर्सिटी का, सर्न लैब का नाम सुना है? इस समय जो पूरे सदी की सबसे महानतम खोज है, दैट इज गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसॉन. फिजिक्स के लोग जानते होंगे. हिग्स इसलिए क्योंकि पीटर हिग्स, बोसॉन मींस बोस, द साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया. उस सर्न यूनिवर्सिटी के बाहर डांसिंग शिवा की स्टैच्यू लगी है, दूसरे किसी धर्म की क्यों नहीं लगी है, यह जानने की जरूरत है. Dancing Shiva is not only the Nataraj symbol, it was the great scientific thinker of our ancient India. Cosmic energy को कंट्रोल करता हुआ शिवा, वो एक कॉस्मिक एनर्जी जिसका प्रभाव हर जिंदा चीज पर पड़ता है, चाहे वो मनुष्य प्रजाति हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ हो. वो कॉस्मिक एनर्जी जो उस बाहर के ब्रह्मांड से हम तक आती है, जहां तक साइंस आज पहुंचा है, हमारे पूर्वज पहुंच चुके थे. लेकिन फिर हम पर लगातार हमले होने लगे और देखते ही देखते हमारी मानसिकता विकृत हो गई. एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या बढ़ती गई. एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में अलग अलग तरह के भांति भांति के नेता पैदा हो गए और उन्होंने इस देश को विध्वंस के कगार में डाल दिया. हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम अपने सही लिटरेचर को पढ़ें. नेता क्या कहता है, प्रिंसिपल क्या कहते हैं, टीचर क्या कहता है, मायने नहीं रखता. गो ऑन द बुक्स. बुक्स विल नेवर बिट्रे यू. किताबें तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगी, सब धोखा दे देंगे. कभी कभी पेरेंट्स भी तुम्हें गलत डायरेक्शन देंगे, लेकिन जब तुम किताबों को पढ़ोगे तो उन चीजों को जान पाओगे जो हमारे इतिहास में हमसे छिपाया गया. और जब उन चीजों को जानोगे तो तुम ये देखोगे कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स का बेस कहीं ना कहीं भारत है.
वैदिक मैथ्स की बहुत बात हो रही है, पढ़े लिखे पेरेंट्स जानते हैं वैदिक मैथमेटिक्स मींस द मैथ्स फ्रॉम द वेदास। पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है, ट्रिकी मैथ्स। वो कहीं से कुछ नया नहीं बना पाएंगे, वो जो बनाएंगे सिर्फ हमसे चुराएंगे, उसके बाद ही बनाएंगे। और जितने भी पूरी दुनिया में इन्वेंशन हुए, जब आप उनको देखिएगा और उसके बाद अपने शास्त्रों का अध्ययन कीजिएगा तो आप जान पाएंगे। जब हमारे विदेशी हमले हुए, कोई भी देश तब तक गुलाम नहीं हो सकता जब तक उसके कल्चर को ना खत्म कर दिया जाए। कोई हमें गुलाम बना सकता है लेकिन हमारी पूजा पद्धति को हमसे छीन नहीं सकता। वो हम घर जाके गायत्री मंत्र पढ़ के शिव का जाप करके करेंगे। जिस दिन उसने इस पैटर्न को खत्म किया, समझिए हम खत्म, हमारी वैल्यू खत्म, हमारी पहचान खत्म। और फॉरेनर्स यानी यूरोपियन लोग जो भूखे नंगे लोग थे, 11वीं 12वीं शताब्दी में सिर्फ जंगल हुआ करते थे, वहां पे शेर भालू घुमा करते थे, कपड़े नहीं होते थे उनके पास पहनने के लिए। उनके कल्चर में आज भी कपड़े कमी है, ज्यादा नहीं हो पाए। उसके बावजूद अगर वो हमसे आगे निकले तो इसका यही रीजन था कि उन्होंने जिन जिन टेरिटरीज को अपनी कॉलोनी बनाया, वहां से इतना एक्सप्लॉइट किया कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इंग्लैंड ने हमसे जितना लिया, अगर वो सिर्फ उतना वापस कर दे, भारत विकसित देश हो जाएगा अगले 5 साल के अंदर में। ये डेटा गूगल पे मौजूद है कि इंग्लैंड ने 190 साल से हमसे क्या क्या लूटा। इंग्लैंड के लोगों ने यहां के लोगों की कमजोरी को समझा। वो जानते हैं 10 देशभक्त खड़े होंगे, तुरंत उनका विरोध करने वाले पड़ोसी भी साथ में ही खड़े हो जाएंगे। हमारे यहां लोगों को इन बातों में शर्म नहीं आती। अभी आपने देखा तिरंगा, हमसे किसी ने कहा कि तिरंगा क्यों मनाए, भाजपा ने किया है। तो हमने कहा दुश्मनी भाजपा से है कि तिरंगा से है? बोले नहीं भाजपा से है। तो हमने भाजपा ने कहा 13 से 15 अगस्त लगाओ, तुम दुश्मनी निकालो, तुम 1 तारीख से लगा दो, जाओ तुम्हारी नहीं करते अपनी करेंगे। अच्छा है, दुश्मनी भी सार्थक तरीके से हो ना। इस तरह की चीजों को लेकर के जब भारत आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ये अद्भुत शक्ति बनेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, भारत की यंगेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, मोर देन 67% इंडियंस आर बिटवीन 15 to 39 एज। द टाइम विल कम, 2047 तक हम लोगों के पूर्वज या माता पिता रहेंगे कि नहीं हम कह नहीं सकते, लेकिन हम सब रहेंगे जितने यहां मौजूद हैं। और हम इस देश को उस ताकत के रूप में देखेंगे कि पूरी दुनिया सर झुका देगी। और ये तिरंगा नॉर्मल चीज नहीं है, ये वो तिरंगा है जो यूक्रेन से लौटे उनसे पूछो, जिनकी बसों पे आगे झंडा लगा था, उनकी बसों पे बम नहीं गिरे। इस तिरंगे की वैल्यू को समझिए। ये सिर्फ तिरंगा नहीं है, जब सेना के आगे झंडा लगता है ना, तो सेना कारगिल और कितनी जगह पर दूसरों को निपटा देती है। ये झंडा एक गर्मी पैदा करता है अपने अंदर, और अगर किसी हिंदुस्तान के अंदर इस तिरंगे को देख के गर्मी पैदा नहीं होती तो उसको अपना डीएनए चेक करा लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। Thank you, sir. The really very bold voice. If you will touch, if you will see the Tiranga, that if your heart won't bubble, if your mind that won't hurt, then definitely true citizen spirit that won't be. Anyhow, that this is the end of the program. I thank to all. Special thanks to my principal sir and also Mittal mom that who has come, and our family, Mr. and our child, very tiny child, and all my staff members, and also my dear students, those who are present here directly, indirectly, who have participated in this program. Thank you all. Commander, please. School dispersed. Now the students will be in line to take the sweets. All the children. Sir.